Hello everyone, today we will know about the chromosome. So in this video we will know about what are the different types of the chromosome that are present and what is the role of the chromosome in the organisms. So before going to the chromosome we should know something about the chromatin. So you have already heard the term chromosome. You have already heard the term chromatin and the DNA. So what are the difference between this chromosome, chromatin in the DNA? So now get into this. So in the cell cycle, let's suppose this is the cell cycle. So in the cell cycle there are the different types of the phases are present. So the first stage is called as the gap 1 phase, or it is also called as the G1 phase. So that means, and before that another stage is called as the G0 or the quiescent stage. So that means if any cell, if it wants to go for the division, then it transfers from the G0 to the G1. If it doesn't want to divide, then it remains in the G0. So that's why the G0 is called as the quiescent stage. So now if the cell wants to divide, then it left the G0, then it transfers to the G1 and the gap 1. Then after the gap 1 there is a phase is called as the S phase, S for synthesis. So what is the synthesis, or why the name is called as the S phase or the synthesis phase? Because here the what does the it synthesize? It synthesizes the DNA. So that's why it is called as the S phase. So after the S phase, another phase is called as the gap 2 or G2 phase, and after that, that is the main phase, that is called as the main phase or the M phase, or it is called as the mitosis or the meiosis phase, because in this phase actually the cell division occurs. So the gap 1 S phase, gap 2 is called as the interphase, and this is called as the M phase is called as the division phase. So what is the difference between the interphase and the division phase? Because in the interphase or during the interphase, the cell already prepares for the division, but in the interphase there is no division in the cell. The cell divides only in this M phase, but in the interphase it prepares for the division. So that's why it is called the interphase. Okay, so now come to the term the chromosome, chromatin and the DNA. So what is the DNA? So DNA, simply imagine a thread of simply you can imagine like the thread is like this. So if this thread it coiled together one and more, and now it forms the structure like this, and this is called as the chromatin. Okay, so in the chromatin at the middle it is called as the centromere. So that means our centromere, it is also called as the primary constriction that divides these two arms. This is the one arm, this is the another arm, and this is called as the chromatin. So that means in the gap 1 the structure of chromosome, it looks like this, and this is called as the chromatin. Okay, so that means what is the difference between the DNA and the chromatin? That means the single DNA or the one DNA coiled together each other, and it forms the chromatin like structure and looks like this. That means one chromatin, you can say that one chromatin contains one DNA. So that means at this phase, that is, there are 23 DNA are present. So that means the 23
chromatins are present. So in our cell, for example, in the animal cell, the 23 DNA are present, and this is called as the chromatin in the gap 1 phase. Okay. So now in the S phase, the DNA is synthesized. So that means another DNA, that means in that chromosome one DNA is present, and it called together to form this like structure that is called as the chromatin. So in the S phase, one chromosome or the one DNA replicates, and now two DNA are formed. So that means one chromosome again called together to form the chromatin. So now this DNA also called together, and now it forms like this. That means the two chromatins here, two chromatins are formed here. That means in the S phase. So that means in the S phase, two chromatins are present, and now these two chromatins are joined, and it looks like this. So that means this is the first one, this is the second chromatin, they are joined together to form in the S phase. So now this one is called as the sister chromatid to each other. That means this one is called as the chromatid, this one is also called as the chromatid, and these two chromatids are also called as the sister chromatid to each other. So that means during the S phase, the chromatin looks like this. That means in the G1 phase, the chromatin looks like this. That means in that one DNA is present, and from the one DNA it forms one chromatin, and at the middle it is called the centromere. In the S phase, because the DNA is synthesized, that means the DNA replication occurs. That means from one DNA, two DNA are formed, and from the two DNA, obviously two chromatins are formed, and two chromatins are again joined together. So now each one is called as the chromatids. This is the one chromatid, this is the another chromatid, and they are called as the sister chromatids. So that means the chromatin in the S phase, it looks like this, but the chromatin, the look in the G1 looks like this. And what is the difference between the chromatin present in the gap 1 and the S phase? In the gap 1, the chromatin contains one DNA, but in the S phase, the chromatin contains two DNA. So that means in the cell, for example, in the human cell, at the gap 1 phase, there is the 23 DNA are present, but in the S phase, 23 chromatins are present. 23 chromatins are present, but the DNA are now the 46 DNA. But here the 23 chromatins are present, and the 23 DNA are present, and the structure looks like this. But in the S phase, the chromatin, same number of the chromatin, that means the 23 chromatins, but the 46 DNA, that means the DNA number doubles. So two chromatids are formed, and each are called as the chromatids or the sister chromatids. So in the gap 2 phase, again the same like structure as present here, but in the division phase, the same like structure are present. Look at this structure, this one, and this one. What is the difference between this structure and this structure and this structure? So during the interphase, that means in the S phase and the gap 2 phase, same chromatin structure are present, but this chromatin is present in the thin structure or decondensed structure. But in the M phase or during the division phase, now it is the very thick. So it is also called as the thick or condensed.
So this is the difference between the chromatin and the chromosome, and because this thick or the condensed structure of the chromosomes are present, so condensed chromatin are present, now you can say that this is the chromosome. So that means the chromosomes are actually the chromatins, but they are present in the thick or the condensed structure, and now it is called as the chromosome. So that means this is the chromatin. That means the one chromatin contains one DNA. At the S phase and the gap 2 phase, this is also called as the chromatin, but it contains 2 DNA, and these chromatins are present in the very thin, or it is called as the decondensed manner. But after going to the M phase, it is very thick, and it becomes very thick or the condensed structure, and now this is called as the chromosome. So that means what is the difference between the chromosome and the chromatin? The chromosome is the thick and the condensed structure that is present during the M phase. But the chromatin is the structure that is the thin and the decondensed structure that is present in the interphase. And what is the DNA? DNA forms the chromosome. One chromatin, the one DNA forms one chromatin in the gap 1 phase, and in the S phase, because 2 DNA are formed, so one same chromatin, it contains 2 DNA, one contains, or it is called as the chromatids or sister chromatids. So the 2 sister chromatids are formed in the one chromatin, and here also same structure. That means here also one, you can say that now it is the one chromosome, but it contains 2 DNA. This is this one, and this is the another one. This is the one chromatid, this is the another chromatid. These 2 chromatids are called as the sister chromatid. So this is the difference between the chromosome and the chromatin and the DNA. So this is the all about the difference between the chromosome, chromatin and the DNA. So now come to what are the different types of the chromosomes. So whenever I say the chromosome, so you can imagine that that is the chromatin that is present during the M phase or the division phase. So now come to the types of the chromosome. Types of chromosome. So there are the 4 types of the chromosomes are present. One is called as the metaphase. Second one is called as the submetaphase. Third one is called as the acrocentric, or it is also called as the metacentric. You can say that simply it is called as the different types of chromosome. So first one is called as the metacentric. The second one is called as the submetacentric. Third one is called as the acrocentric, and the fourth one is called as the telocentric. So these 4 types of the chromosomes are present on the basis of the presence of the centromere. So look at this structure. They are the different types of the chromosomes. Look at this metacentric chromosomes. So in the metacentric chromosome, this is the centromere, or the centromere is also called as the primary constriction. Primary constriction means here it forms a gap, or it divides these 2 arms of the chromosome. So this is the centromere, and this metaphase or the metacentric chromosome, the centromere is present at the middle. So that means at the metacentric, the centromere is present at the middle of the chromosomes. So that means
this is the one arm, this is the another arm of the chromosome. So now because the centromere is present at the middle of the chromosome, these two arms of present, they are of the equal size. Okay, so this is the metacentric chromosome. So next come to the submetacentric chromosome. This is the submetacentric chromosome. So here the centromere displays of the away just after the middle. That means actually at the middle part is the here, but the centromere is present away, some part away of the middle part. So it is the away from middle. So because the centromere is present away from the middle, so now these also two arms are formed, but these two arms are unequal size. Unequal size. So that means one arm is the shorter. So here this one is short and this arm is a very long arm is formed. So always this short arm is called as the P arm and the long arm is called as the Q arm. Okay, so because now the centromere is present away from the middle, two types of the arms are present. One is called as the short arm, another is called as the long arm. The short arm is called as the P arm and the long arm is called as the Q arm. So this is the submetacentric chromosomes. So again another is the acrocentric. This is the acrocentric. So acrocentric means now the centromere displaces near the terminal part. This is the terminal part. So that means a very large arm or the long arm or a Q arm is formed and a very short arm or the P arm is formed due to the acrocentric chromosomes. So another is the telocentric. The telocentric means the centromere transfers exactly to the terminal part. So terminal part. So that means after the transferring the centromere to the terminal part, so now only one arm can be formed and this arm is called as the Q arm. Why? Because already it is very long. So this is the different types of the chromosome on the basis of the presence of the centromere. So that means in the metacentric, the centromere is present at the middle. So after that or because of that, the equal size of the two arms are formed. But in the submetacentric, acrocentric and the telocentric, unequal size of the arm is present. The short arm is called as the P arm, the long arm is called as the Q arm. So in the submetacentric, the centromere is present just away from the middle. So because a P arm and the Q arm is formed, the acrocentric, the centromere is near the terminal, not exactly to the terminal, near the terminal. That means a very long arm is formed and a very short arm is formed. So at the telocentric, the centromere is present at the terminal. That means one arm is formed and that arm is the long arm, or you can say that it is the Q arm is formed. So these are the different types of the chromosome on the basis of the presence of the centromere in the chromosome. So another chromosome is present, that is called as the satellite chromosome or the satellite chromosome, or you can say that SAT chromosome, which is the same, that is the satellite chromosome. So what is the satellite chromosome? One is the chromosome, one is the satellite chromosome. So what is the difference between that? Look at the structure of the chromosome. This is the chromosome, simply chromosome, and look at this structure. And this structure is called as the satellite or the SAT chromosome. So what is the difference between the structure of this chromosome? So in the satellite chromosome, one centromere is present
or the primary constriction, which is present also in the chromosome. So the main difference is the structure. So that means this is the one constriction is present in the, obviously in the chromosome here also, and that is called the primary constriction. But some chromosome contains another constriction here. So because of that, of the presence of this constriction, one this like structure is present, and this structure is called as the satellite. So in the satellite chromosome, a secondary constriction is present, and this because of this secondary constriction, it forms a satellite, or you can say that a small fragment are formed. Here also some again another fragment is formed, which is looks like the satellite. So that's why in the satellite chromosomes, because of the presence of the secondary constriction, the satellite of the small fragment is formed. So it contains secondary, or the two constriction are present in the satellite chromosomes. Not all the chromosomes are the satellite chromosomes. Some chromosomes contain satellite. Which chromosomes? So in human being, it is the 13, 14, 15, 21 and the 22 chromosome. So these 5 chromosome forms the satellite or the secondary constriction. So that means these exact 5 chromosomes are called as the SAT chromosomes or the satellite chromosomes. देखिए एक टॉपिक है कार्योटाइप। कार्योटाइप तो आपके मन में आया होगा कि कार्योटाइप एग्जैक्टली क्या है। देखिए कार्योटाइप को हम बोल सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जितना क्रोमोसोम है उसका कंप्लीट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे इसको हम बोलेंगे कैरियोटाइप। देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, कैरियोटाइप। ये किसका है, ये ह्यूमन का है। और ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम, और दैट टू 23 पेयर में है। तो पेयर वाइज वो और 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर, मतलब इस 23 क्रोमोसोम जो है, इस 23 क्रोमोसोम को आप इसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक 23, ये हो गया 22। 23 मतलब एक हो गया मेल का, एक हो गया फीमेल का। अगर फीमेल होगा तो ये 22 तो होगा, उसके साथ ये वाला होगा, ये हो गया 23 हो गया। अगर मेल होगा तो ये होगा, उसके साथ ये वाला होगा, तो ये हो गया कैरियोटाइप और द कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। तो जिसका जैसा हो गया, मतलब ह्यूमन का 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर है। जो 23 पेयर को एग्जैक्टली कैसे सजा जाता है, इस सजावट को ही बोलते हैं कैरियोटाइप। आप पहले जान लीजिए वो कैसे सजावट होता है, मतलब ये जो हो गया वो कैसे हो गया। देखिए एक सेल डिवीजन में एक फेज आएगा, वो फेज को हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट एक बीच में होगा, इस बीच मेटाफेजिक प्लेट में वो क्या होगा, ऐसे ही क्रोमोसोम बीच में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। तो इसको बोलेंगे क्या, मेटाफेज। तो एक मतलब मिडिल पर, मतलब सेल के मिडिल एकदम मेटाफेजिक प्लेट पर ऑल क्रोमोसोम, यहाँ पर एक मतलब एक ही मेटाफेजिक प्लेट में सभी क्रोमोसोम रहता है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे मेटाफेज। तो इसी स्टेज को हम क्या करेंगे, तो अभी उसको स्टेन कर देंगे। स्टेन मतलब क्या हो गया, अगर स्टेन कर देंगे किसी डाई पर,
अगर स्टेन कर लेंगे वो क्या होगा, एग्जैक्टली जहाँ पर होगा उसका स्ट्रक्चर वो आ जाएगा, मतलब वहाँ पर रुक जाएगा, स्टेन हो जाएगा। किस स्टेन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, डाई पर, और एग्जैक्टली बोलेंगे किस डाई पर होगा, जिम्सा, GIEMA से, जिम्सा एक डाई है, उससे वो स्टेन होता है। वो कहाँ पर होता है, मेटाफेजिक और मेटाफेज स्टेज पर ही वो स्टेन हो गया। तो अभी उसका हम आ गया, ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। अभी क्या करेंगे, उसको फोटोग्राफ मतलब सिंपली फोटो निकालेंगे। तो ये फोटो निकालेंगे इस स्टेज को, और इस मतलब इस फोटो उठाने का काम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पिक्टो माइक्रोग्राफ। पिक्टो माइक्रोग्राफ, पिक्टो माइक्रोग्राफ क्या हो गया पिक्टो माइक्रोग्राफ क्या हो गया, जो मेटाफेजिक प्लेट में अथवा मेटाफेजिक स्टेज पे जो स्टेन कर दिए, उसके बाद जो फोटो उठाए, इस फोटो करने का प्रोसेस को ही हम बोलेंगे पिक्टो माइक्रोग्राफ। और सिंपली हम बोलेंगे टेकिंग फोटो आफ्टर स्टेनिंग बाय द जिम्सा एट द मेटाफेजिक स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम, इसको हम बोलेंगे पिक्टो माइक्रोग्राफ। तो अभी फोटो आ गया, मतलब 46 क्रोमोसोम तो आ गया, अदर 23 पेयर क्रोमोसोम आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब मतलब एक डिफरेंट होगा, मतलब कोई छोटा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम जानेंगे कैसे, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा ही देखा जाता है। तो अभी क्या करेंगे, वो जो लेंथ को हम मापेंगे, मतलब सेंट्रोमेयर एक हो गया, इसका लेंथ सपोज 1 मीटर है, इसका लेंथ सपोज 0.5 मीटर है, इसका सपोज 0.1 मीटर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो गया। इस लेंथ को हम मापेंगे और मापने के बाद उसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईडियोग्राम, ईडियोग्राम, और इसको बोल सकते हैं हम कारियोग्राम। ओके, ईडियोग्राम और कारियोग्राम किसको बोलेंगे, अरेंजमेंट को। देखिए हम टोटल को अगर बोलेंगे इसको बोलेंगे कारियोटाइप, लेकिन जो अरेंजमेंट को बोलेंगे हम ईडियोग्राम और द कारियोग्राम। जो फोटो उठाया उस फोटो स्टेज को और फोटो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पिक्टो माइक्रोग्राफ। तो पहले पिक्टो माइक्रोग्राफ मतलब फोटो उठाएंगे, कैसे, उससे पहले हम स्टेनिंग करेंगे, कहाँ, किस डाई पर, जिम्सा पर। स्टेनिंग करने के बाद फोटो उठाएंगे, इस फोटो स्टेज को और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पिक्टो माइक्रोग्राफ। उसके बाद हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जहाँ पर भी जैसे ही कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ईडियोग्राम और द कारियोग्राम। वो करने के बाद हम उसको स्टेजेस पर देखेंगे। तो इस स्टेज और कार्योटाइप में देखेंगे, ये सबसे बड़ा होगा, इससे वो थोड़ा छोटा होगा, इससे वो थोड़ा छोटा होगा, इससे और थोड़ा छोटा और थोड़ा छोटा, इसे करके ये सबसे छोटा होगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक और क्रोमोसोम हो गया जो मेल को जाएगा और जो फीमेल को जाएगा। जो नॉर्मल मतलब लेट सपोज एक मेल हो गया, मेल में एक हो गया ऑटोजोम, एक हो गया आलोजोम। इस आलोजोम को हम बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आलोजोम ही डिफाइन करेगा वो बंदा या बंदी, वो बंदा होगा या बंदी होगा, मेल होगा या मेल फीमेल होगा। तो ये डिपेंड करता है वो सेक्स क्रोमोसोम किस टाइप का हो गया। तो मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जो ये ऑटोजोम है, ऑटोजोम कितने हैं, 22 पेयर्स, मतलब ए वाला से इस ए वाला जो हो गया इसको हम बोलेंगे ऑटोजोम, मतलब 22 पेयर हो गया। एक पेयर अलग है, ए हो गया ए वाला, ए हो गया ए वाला। अगर मेल में आएगा तो क्या होगा, 22 पेयर हो गया ऑटोजोम, द सेक्स क्रोमोसोम में आलोजोम, एक कौन पर ये 22 हो गया प्लस 1 पेयर हो गया आलोजोम। तो ये 1 पेयर कहाँ पर होगा, अगर मेल होगा तो कौन आएगा, ए वाला आएगा, मतलब 22 आएगा
प्लस ये मेल वाला एक पेयर आएगा। अगर फीमेल होगा तो क्या होगा, 22 पेयर मतलब ए वाला आ जाएगा। उसके बाद 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम अर्थात आलोजम हो गया, वो क्या हो गया, फीमेल। मतलब अगर मेल होगा तो ये फीमेल नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, मतलब 22 प्लस ए वाला। अगर मेल फीमेल होगा तो क्या होगा, 22 होगा, ए वाला नहीं होगा तो ए वाला ही होगा। तो ये हो गया कैरियोटाइप, मतलब आलोजम मतलब ऑटोजम और सेक्स क्रोमोसोम, ये तीनों मतलब ये जो 22 प्लस 1 मतलब 23 पेयर को अरेंजमेंट हिसाब से ही वो जो होता है मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, उसको हम बोलेंगे कैरियोटाइप। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले वो मेटाफेज स्टेज पर ही स्टैंड करेंगे, किस टाइप पर, जिम्सा टाइप, जिम्सा टाइप पर हम करेंगे। उसके बाद एक फोटो उठाएंगे, फोटो को क्या बोलेंगे, पिक्टोमाइक्रोग्राम। फोटो उठाने के बाद क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ऊपर से बड़ा मतलब छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, इसको क्या बोलेंगे, ईडियोग्राम और कार्डियोग्राम। उसके बाद ऐसे प्रेजेंटेशन कर देंगे। प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पर हो गया 22 पेयर हो गया आपका ऑटोजम, एक पेयर हो गया आपका आलोजम और द सेक्स क्रोमोसोम। ओके, एक और टाइप का क्रोमोसोम हो गया, इसको बोलेंगे हम जियांट क्रोमोसोम। जियांट क्रोमोसोम, जियांट मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा, वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा बड़ा क्रोमोसोम हो गया। मतलब कुछ क्रोमोसोम ऐसे होता है जैसे नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम, लेकिन कुछ क्रोमोसोम होता है जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसको हम बोलेंगे जियांट क्रोमोसोम। नॉर्मली 2 टाइप का क्रोमोसोम दिखा जाता है, एक होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, एक होता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। तो क्या हो गया, पॉलीटीन क्रोमोसोम, एक हो गया लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। देखिए पहले हम जानेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या है कि इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखिए ये कितना बड़ा है, मतलब ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, मतलब ये बहुत बड़ा है। तो इसको ही इसलिए ही हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम या लैम्प ब्रश क्रोमोसोम या जियांट क्रोमोसोम। तो अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में अगर देखा जाए, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पर दिख जाता है, वो दिख जाता है, वो पहले हम जान लीजिए वो कौन डिस्कवर किए थे। वो डिस्कवर किए थे बाल्बियानी, बाल्बियानी इन 1881 में वो बाल्बियानी वो डिस्कवर किए थे। कहाँ पर डिस्कवर किए थे, डायप्टेरियन। देखिए आप बुक में बहुत सारा पढ़ रहे होंगे कि इंसेक्ट पर दिखाता है, इंसेक्ट पर वो पॉलीटीन क्रोमोसोम दिखता है। आप बोलेंगे कि बुक में तो लिखा है इंसेक्ट पर दिखाता है, आप बोले डायप्टेरियन, ये डायप्टेरियन कहाँ है और क्या है। देखिए इंसेक्ट का बहुत ऑर्डर है, एक ऑर्डर है डायप्टेरियन। डायप्टेरियन का ऑर्डर मतलब क्या हो गया, जिस इंसेक्ट में 2 विंग हो गया, इसको हम बोलेंगे डायप्टेरियन। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, काइरोनोमस, सिंपली द फ्लाई, जो मक्खी है वो भी इसमें जाता है, कहाँ पर, डायप्टेरियन पर। लेकिन ये याद रखना, ये काइरोनोमस, ये नीट में बहुत मतलब बहुत बहुत बार आता है, वो काइरोनोमस, मतलब काइरोनोमस भी वो डायप्टेरियन का एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें आता है। ड्रोसोफिला भी आता है, फ्लाई भी आता है, किसी पर भी आता है, मतलब 2 विंग जिस इंसेक्ट पर होगा इसको हम बोलेंगे डायप्टेरियन पर। तो डायप्टेरियन में वो पॉलीटीन क्रोमोसोम दिखाता है। अगर एग्जाम में कभी कभी आता है कि डायप्टेरियन मतलब इंसेक्ट में एग्जैक्टली कहाँ पर इस क्रोमोसोम दिखाता है, कहाँ पर, सालिवरी ग्लैंड। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम डायप्टेरियन इंसेक्ट में जो सालिवरी ग्लैंड है एग्जैक्टली वहां पर दिखाता है। ये हो गया पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखिए अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में देखिए तो देखिए ये हो गया क्रोमोसोम 2 लेफ्ट टर्म, एक हो गया क्रोमोसोम 3 लेफ्ट टर्म,
एक हो गया क्रोमोजोम 3 राइट आर्म, सॉरी क्रोमोजोम 2 राइट आर्म, एक हो गया क्रोमोजोम 4, एक हो गया क्रोमोजोम 3 राइट आर्म, एक हो गया एक्स क्रोमोजोम, एक हो गया सेंट्रोमियर, जिसे बीच में हर क्रोमोजोम में होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा क्रोमोजोम क्या है, एक ही क्रोमोजोम का? नहीं, जियान क्रोमोजोम मतलब एग्जैक्टली द पॉलीटिन क्रोमोजोम क्या है, वो बहुत सारा क्रोमोजोम कभी कभी एक साथ जुड़ जाता है और एग्जैक्ट जुड़ के वो करेगा पॉलीटिन क्रोमोजोम। ऐसे क्रोमोजोम 2 का लेफ्ट आर्म आ जाएगा, क्रोमोजोम 3 का लेफ्ट आर्म आ जाएगा, क्रोमोजोम 2 का राइट आर्म आ जाएगा, एक्स क्रोमोजोम आ जाएगा, क्रोमोजोम 4 आ जाएगा। मतलब किसी भी क्रोमोजोम का किसी भी आर्म जुड़ जाएगा एक ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पॉलीटिन क्रोमोजोम। वो कहाँ पर दिखता है? सालिवारी ग्लैंड ऑफ डायप्टेरियन इंसेक्ट का जो सालिवारी ग्लैंड है वहाँ पर वो पॉलीटिन क्रोमोजोम दिखता है। एक हो गया पॉलीटिन क्रोमोजोम, एक हो गया और एक, इसको हम बोलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोजोम। एक हो गया लैम्प, एक हो गया ब्रॉस। मतलब क्या हो गया? लैम्प का जो ब्रॉस जैसा होता है वहाँ ऐसे ही वो दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोजोम। इसको कौन डिस्कवर किए थे? फ्लेमिंग और कौन किए थे? रॉकेट इन 1882 जस्ट आफ्टर 1 ईयर। मतलब बाल्बिया ने 1881 में पॉलीटिन क्रोमोजोम डिस्कवर किए थे। उसके बाद जो फ्लेमिंग द रॉकेट है उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 1882 में वो लैम्ब्रस क्रोमोजोम को वो डिस्कवर किए थे। वो जो लैम्ब्रस क्रोमोजोम वो ऐसा ही वो दिखता है। लैम्ब्रस मतलब वो स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ऐसे ही दिखता है, मतलब लैम्प का जो ब्रॉस है उसका जैसे ही वो दिखता है। तो लैम्ब्रस क्रोमोजोम कहाँ पर दिखता है? ये दिखता है ऑलमोस्ट इन ऑल एनिमल एक्सेप्ट मामल। मतलब मामल को छोड़ के मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम ऑल एनिमल में वो लैम्ब्रस क्रोमोजोम दिख जाता है। तो मामल में नहीं होता है, लेकिन और सभी एनिमल में मैक्सिमम, मतलब कुछ एक्सेप्शन है लेकिन मैक्सिमम एनिमल में दिखता है एक्सेप्ट मामल। अगर देखेंगे मतलब जो पॉलीटिन क्रोमोजोम हो गया वो क्या हो गया? वो बहुत सारा क्रोमोजोम जुड़ के हो गया। तो वैसे लैम्ब्रस क्रोमोजोम बहुत सारा क्रोमोजोम जुड़ के नहीं हो गया, वो 2 क्रोमोजोम को जुड़ के होगा। उसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम। इस होमोलोगस क्रोमोजोम जुड़ के ही वो बोलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोजोम हो गया। देखिए ये हो गया एक क्रोमोजोम, ये हो गया इसका होमोलोगस क्रोमोजोम। और टेट्राफेज स्टेज आप म्यूसिस में पढ़े होंगे, हम बाद में ही पढ़ेंगे। वहां पर एक हो गया टेट्राफेज हो गया। तो वैसी स्टेज पर तो होमोलोगस क्रोमोजोम 2 जुड़ के अगर इसको हम जूम करेंगे वो ऐसा ही दिखता है। इसको हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे लूप। ये जो बड़ा बड़ा जो हो गया ये हो गया लूप। इसका भी वैसे ही, इसको हम बोलेंगे बाल्बियानी रिंग। बाल्बियानी रिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो बाल्बिया ने डिस्कवर किए थे, इसको बोलेंगे बाल्बियानी रिंग। इसका भी जो बड़ा बड़ा पार्ट है इसको बोलेंगे लूप। ये हो गया देखिए सेंट्रोमियर बीच में, ये हो गया एक क्रोमाटिड, ये हो गया एक और क्रोमाटिड। तो ये बोल के ये मिलके क्या करेंगे? लैम्ब्रस क्रोमोजोम। और ये हो गया जियांट क्रोमोजोम के बारे में। तो ये हो गया क्रोमोजोम स्ट्रक्चर ऑल अबाउट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं, और बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो मैं ट्राई करूँगा अच्छा करने के लिए, अगर अच्छा लगा तो ट्राई करूँगा और अच्छा करने के लिए। और आप बोलेंगे कि किस टॉपिक पे करेंगे तो मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में बोलने के लिए। धन्यवाद।